way we conduct the session, basically we ask for some questions. First of all, I will start asking you some questions about your life in Saj Yoga and other things. Then I will open the stage with others as well. They can ask some questions with you. And once you answer any question, and once I ask any question, I will just translate it in Hindi as well, so that the person who knows Hindi only knows Hindi, like can understand. So uh, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी मैं सिर्फ एंटोनी भैया को ये बता रहा था कि हम कैसे करके सेशन करते हैं और कैसे करके मुझे मैं ट्रांसलेट करता हूँ. तो बस यही बेसिक स्टफ बता रहा था. सो मैं एंटोनी भैया से अपना पहला क्वेश्चन पूछता हूँ. सो आई विल स्टार्ट बाय आस्किंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो एंटोनी अंकल, लाइक कुड यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लाइक how where you from where you are, and how did you get your self realization, what do you currently do, and since it's been like a very long journey of your Saj Yoga. Like, could you just introduce yourself to us? And before you start answering, I'm just going to translate it also, right? So मैं बस एंटोनी भैया से उनका इंट्रोडक्शन मांग रहा हूँ कि वो सहज योग में कितने साल से हैं, वो अभी कहाँ रह रहे हैं, और उनकी जर्नी अभी तक कैसी रही है. सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है. ओवर टू यू एंटोनी भाई. Okay, thank you very much, Jai Shri Mataji. Thank you very much for inviting me. It's a very great honor, pleasure to be here with you. Actually, Priti, who was on your program, on your group, I think a few weeks ago, she asked me to to join. She's Jeremy's daughter. I don't know if you know. And we live in Milan. We do programs together, and she told me what a great experience she had on your meeting. So very happy to be here. Yeah, so I'm from South Africa originally. I was born and raised in South Africa. When I was 25, I came to Italy. And after about 1 year, I met my wife-to-be. And she had been practicing Saja Yoga for a year. She came on India tour for 1 month. And coming back from India tour, she decided to take a time out of the collective. And that's when we met. And after some time, she told me about Saja Yoga. And I tried the experience of self-realization with her. And the experience was so incredibly strong. You know, I was very skeptical, a lot of questions, very rigid about any approach to spirituality. So I said, okay, let's try. Went through the process, and I felt a huge, very strong, cool breeze from my Sasrara, and a state of bliss for a few days. So, but being a very tough nut, very rational, very rigid, very skeptical about all groups, I just carried on doing meditations like I was doing some meditation before. But with her together, we used to meditate every day, and I used to get very strong experiences of deep meditation after self-realization. So one step at a time, I started experiencing the Kundalini, the state of total unconditional love, which I experienced when getting into thoughtless awareness, and the whole process of transformations just started happening day after day through meditation. So I wasn't doing any mantras. I didn't know anything really about Saja Yoga. I was just trying to get into the present moment, experience myself, the subtle system. And just by clearing out, I was getting a lot of clearing out experiences. And because my wife-to-be, then we got married, whatever I was experiencing, she was saying, okay, if you're feeling this, do this, put your hand here, let's do foot soak, and so on and so on. And so it was a transformational experience just based on meditation. And then after some time, I was one step at a time. I started relaxing, started getting more confident and faith in what was happening in the Kundalini. So we went to the center, the Sahaj Center, a local center,
also that I was very, if anybody starts telling me, this is what you must do and this is the truth and all that, then I'll, just run away. But I found very, very nice people, very loving people, everybody just getting on with their seeking. And so just one step at a time, I came into Sahaj. And then after about 9 months, well, after, let's say 7 months, I had my first encounter with Sri Mataji, which was Sazrara Puja in Sorrento in 89. And I was very, once again, this whole aspect of devotion and referring to somebody else was very difficult for me at the beginning. So I was reacting to everything. But what I remember very clearly was the day after the puja, I was sitting in the early morning and I felt my sasrara completely open, completely like a cool lake of vibrations in my sasrara. And from that time, I started recognizing the divinity of Sri Mataji. And after a couple of months, I went to the Guru Puja in Lago di Brais, Brais Lake in northern Italy for Guru Puja. And I was in that period, this was 9 months after my realization, where I was sitting in the hall at the back. There were 1,000 people. And I had this question in my mind, Sri Mataji, I believe you are my mother, I'm your son. Please, give me give me the confirmation. And Sri Mataji looked at me very like a beam of energy coming from her eyes, looking at me for a long time. And I was looking, and I looked down, and looked up again, and then she nodded and smiled very lovingly. And all my answers, the answers to all my questions were just completely satisfied. From that day, I just completely recognized Sri Mataji as being my mother, the divine, and from then on, never any doubt or question about Sahaja Yoga, Sri Mataji, and this course. So yeah, that's more or less the start. Sorry if I was a bit long with that. Yeah. Sorry, I was on mute. So yeah, thanks for answering. Yeah, I'll just try to translate whatever I Okay. remember. तो भैया ने पहले बताया कि भैया ने कहा कि जो हमारे इससे पहले सेशन में प्रीति दीदी आई थी, तो प्रीति दीदी के थ्रू उन्हें यहाँ के बारे में पता चला कि हम लोग क्या क्या सेशन करते हैं। तो जब उन्हें पता चला तो काफी एक्साइटेड हुए थे और उन्होंने सेशन ज्वाइन करने की तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। उसके अलावा भैया ने बताया कि भैया पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे। साउथ अफ्रीका के बाद वो इटली में आए जब वो 25 साल के थे, और उनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ ने तब सहयोग करना स्टार्ट कर लिया था, आई थिंक 1-2 महीने पहले जब वो इटली में आए थे उससे पहले। तो उनकी वाइफ के थ्रू ही उन्हें रियलाइजेशन मिला, क्योंकि उनकी वाइफ पहले से ही सहयोग प्रैक्टिस करने लग गई थी। और उन्होंने बोला कि जब उन्हें रियलाइजेशन मिला तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर था, बहुत ही स्ट्रांग था। और उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में मेरे मन में बहुत से डाउट्स थे, मुझे लगा कि ये सब मतलब शक शक वाले बिहेवियर था मेरा, कि ये कूल ब्रीज कहाँ से आ रही है, मुझे एकदम से क्या हुआ। तो मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उसके अलावा फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब रियलाइजेशन के बाद भैया बताते हैं कि वो रोज मेडिटेशन करते थे अपनी वाइफ के साथ, और जैसे जैसे वो मेडिटेशन करते गए, जैसे जैसे मेडिटेशन में डीप जाते गए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका शरीर, उनका जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होती चली गई। और मेडिटेशन की वजह से वो, उन्होंने बोला कि वो प्रेजेंट मोमेंट में भी आने लग गए थे। उनकी वाइफ, उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ, मेरी वाइफ मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती थी फुट सोक करवाने में, मुझे बताते थे कि कहाँ कहाँ पे हाथ रखना है, कौन से चक्र पे हाथ रखना है। तो उनकी वाइफ ने काफी उन्हें हेल्प किया। उन्होंने बोला रियलाइजेशन के 7 महीने के बाद उन्होंने, उनका सबसे पहली बार श्री माता जी से मीटिंग मिलन हुआ, वो भी सहस्त्रार पूजा में 1989 में। और उस पूजा के बाद उन्होंने बोला कि उस पूजा के अगले दिन मैं माँ के समक्ष बैठा हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहे थे, मेरा सहस्त्रार पूरा बहुत ठंडा हो गया था, मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड ब्रीज आ रहे थे। तो ऐसे करके मुझे श्री माता जी की और पहचान होने लग गई। फिर उन्होंने बोला कुछ समय के बाद मैं गुरु पूजा अटेंड कर रहा था, मैं पीछे बैठा था, और वहां पे मैंने श्री माता मन ही मन में प्रार्थना करी, श्री माता जी आप ही मेरी माँ हो, और मेरे मन में जो भी सवाल है वो दूर कर दीजिए। तो श्री माता जी ने
उन्हें स्टेज पे बैठे हुए थे श्री माता जी, वहां से उन्होंने भाई अंकल की तरफ काफी देर तक देखा, और अंकल को बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आने लग गया, और उस मोमेंट पे अंकल के मन में जो भी सवाल थे, जो भी डाउटफुलनेस थी, जो भी थोड़ा बहुत था, वो सब जा चुका था, और अंकल ने सब कुछ, उन्हें श्री माता जी की पहचान कंप्लीट हो गई थी, ये उन्होंने पूरा बताया। सो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब मैं दूसरे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। मैं आई विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। बेसिकली, सो भैया, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सहज योगा since, I mean, more than 30 plus years, and you must have had like many miraculous experiences in Saj Yoga. So could you like tell us about the most memorable one, or let's say one or two most memorable ones that you could remember? सो मेरा दूसरा क्वेश्चन भैया से यह है कि भैया, आप काफी साल से सहयोग में हैं, आपने 30 साल से भी ज्यादा आपको हो गए हैं, तो मैंने बस भैया से पूछा है कि आपके जो भी कोई भी एक या दो बहुत बहुत ज्यादा मेमोरेबल आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हों सहयोग में, क्या आप उन्हें हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ओवर टू यू। Okay. Yeah, talking about miraculous experience is very subjective in such a yoga, as far as I'm concerned. For me, it's always the greatest miracle for me was to start feeling the vibrations and the chakras on my hands, and the experience of other people feeling the vibrations of people, of anything, knowing the subtle knowledge, vibratory awareness of everything. For me, that's the greatest miracle. And it's always, I remember when I was quite new in Saja Yoga, I was so overwhelmed by the power of vibrational awareness that I prayed to Shimataji, please don't let us ever lose this power of knowledge of reality through vibrations. And through that, just by doing bandan, by experiencing, everything becomes miraculous in a certain way. Things just happen at the right time, at the right moment. And for me, that's the real miracle. Then, of course, situations happen. I had the opportunity to live in Kabela with Shrimataji in the early days, in the early 90s. And in 1992, Shrimataji came to where I was living in Sardinia for a public program. And in that time, so we had an opportunity to witness her, her love and her power, her just being with her, how powerful that was, and how people were just transformed by being with her. And one of the experiences I had in that visit was it's just that wherever Shrimataji went, we're talking about Italian people living in Sardinia. We went to a restaurant, and it was quite late. It was on Sunday. The program was on Saturday. And Sunday morning, just late in the morning, Shimata says, okay, let's go out for shopping. And so we went out, and then, okay, let's go for lunch. We were just going, nothing planned at all. Everything was closed. It was already Sunday, everything closed. But of course, we found everything that Shimataji wanted. And quite soon after lunch, mother was leaving. So we said, okay, let's go to this beautiful place on the sea, the restaurant. And also there, all the waiters, everybody was just doing pranam to Shrimataji. Like one was coming, oh, you remind me of my mother, you're so beautiful, and offering prasad. Everything was just like a puja. Yeah? And this was the experience with being with Shrimataji, is that whoever was just coming into her presence would be attracted and transformed by her being. Yeah. One, let's say, it's a miracle story, if you would like to call it that, is I was traveling with Shrimataji in America, American Realization Tour,
And we arrived in Vancouver. I think there was going to be a Vishnu Maya Puja. And from the airport to the ashram, it started raining. So it was raining, but it was sunny, you know. So I said, "Oh, you know, Shrimati Ji, in South Africa, they say it's a monkey's wedding when it's raining, but there's sunshine." And you know, it was very, very easy, very relaxed. And Shrimati Ji was saying, "Yes, in India we also have a name for this. I can't remember what she said, you know." Anyway, we get to the ashram, and Shrimati Ji comes into the living room. And she starts to ask people to start taking vibrations from her, you know, to massage her feet, and you know, other people to massage her hands, other people their arms, are just working out vibrations very, very strongly. And at a certain point, I just I raised my eyes, and I saw a lightning stroke coming right across the room in front of her feet, you know, from this you know, light rain that was there before became an expression of this Vishnu Maya power, which manifested in front of Shrimati Ji. So that's one miracle story which comes to mind, and the power of Shrimati Ji when she manifests in one of her divine aspects. Yeah. सो भैया ने बताया कि जब मैंने पूछा कि सबसे आपके लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसी मेमोरेबल एक्सपीरियंस, तो उन्होंने यही बोला कि सबसे बड़ा उनके लिए मेरेबल एक्सपीरियंस तो यही था कि उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही था कि जब उन्हें वाइब्रेशन फील करने स्टार्ट हो गए, जब उन्हें हाथों पे चक्र अपने फील होने स्टार्ट हो गए, उनके लिए सबसे बड़ा मिराकुलस चमत्कारी एक्सपीरियंस यही था। और लोगों के वाइब्रेशन, लोगों के चक्रों के बारे में उन्हें नॉलेज आने लग गई, उनके हाथों पे फील होने लग गया, ये उनके लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। उन्होंने बोला कि फिर जब मैंने बंधन देना सीखा, जब मैंने जैसे-जैसे मैं बंधन देता जाता था, जब मैं बंधन देता था, कुंडली उठाता था, तो ऐसा लगता था सारी चीज़ें, सारे मेरे काम, सब चीज़ें सही समय पर हो जा रही हैं, सब कुछ सही तरीके से हो जा रहा है। और उन्होंने बताया कि श्री माता जी के साथ मेरे पास एक मौका था, मौका मिला था मुझे जब मैं तबेला में आया था 1992 के टाइम पे, और हम एक बिग प्रोग्राम में गए थे। तो हम श्री माता जी के साथ पहली बार कहीं गए थे, और ये बहुत ही सौभाग्यशाली एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और उन्होंने बोला कि एक चीज श्री माता जी की जो चमत्कारी ये भी थी कि जहां भी श्री माता जी जाती थी, तो लोग उन्हें देखते थे, लोग उनसे देखते ही ऐसे आकर्षण, ऐसे अट्रैक्टेड हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे, और एकदम उनके पैर छूने लग जाते थे, उनसे प्रेम करने लग जाते थे। तो कह रहे थे श्री माता जी के पास ऐसी चमत्कारी पावर थी कि लोग अट्रैक्ट हो जाते थे उनसे, और लोग उन्हें प्रणाम करने लग जाते थे कहीं भी जाते थे। उन्होंने बोला कि एक दिन हम संडे के दिन हम एक दिन हम शॉपिंग पे गए थे, मैं श्री माता जी को लेके गया था। संडे के दिन टिपिकली सारे मार्केट बंद होते हैं, बट उस दिन श्री माता जी को जो जो सामान चाहिए था वो सब दुकानें खुली हुई थी। और उन्होंने बोला कि जहां भी, जिस भी जगह पे माँ जा रही थी मार्केट में, वहां पे लोगों ने, जैसे ही लोगों ने देख रहे, लोग एकदम से अट्रैक्टेड हो जा रहे और माँ को प्रणाम करने लग जा रहे। और उन्होंने एक और मिरेकल एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो ये है कि एक भैया एक बार श्री माता जी के साथ यूएसए अमेरिका जा रहे थे विष्णु माया पूजा के लिए। तो बता रहे थे जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरे तो एक हमारे सामने बारिश हो रही है, और उधर जस्ट ऊपर आसमान में देखा तो सूरज भी आ रहा था। बिल्कुल ये भी एक मिरेकल एक्सपीरियंस था। और लास्ट में उन्होंने बताया कि जब वहां पे श्री माता जी प्रोग्राम की पूजा की जगह पे जब पहुंचे, तो वहां पे उन्हें गेट से एक लाइट आते हुए दिखी जो श्री माता जी के श्री चरणों में पढ़ ली थी। तो वो उन्हें एक बहुत मिराकुलस एक्सपीरियंस लगा था विष्णु माया पूजा का। तो ये भैया का पूरा आंसर है मेरे सेकंड क्वेश्चन का। या सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैन यू शेयर योर व्हाट योर डेली सहज योगा शेड्यूल लुक्स लाइक डू यू फॉलो एनी स्पेसिफिक डिसिप्लिन टू कीप योरसेल्फ इन बैलेंस? सो मेरा अगला क्वेश्चन भैया से है कि क्या आप हमें अपना डेली सहज योग का कोई शेड्यूल बता सकते हैं? आप क्या क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं जिससे आप बैलेंस में, संतुलन में रह पाते हैं? ओवर टू यू भाई। Okay. Yeah. Yeah. Before I answer that, maybe it just came to mind an experience with Shrimati Ji when she came to visit Sardinia. Is after the public program, she came to our apartment for dinner and met the whole collective. And at a certain point, we gave her a present of a Sri Ganesha statue, which was made by a local artist from Sardinia. They make beautiful ceramics. And it was put in front of Shrimati Ji.
on the ground, and she said, "This Sri Ganesha has got everything, even the Kundalini." And she put her attention on this Ganesha, and she said, "It's so complete, and it even has Kundalini." We started feeling a gush of vibrations coming through the room, like completely filled with vibrations. So it just shows that even through material expressions of love and creativity, how vibrations can be can be manifested, and through Shrimatiji's divine attention. Would you like to translate that? Yeah, I can. Too long. So भैया ने अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करने से पहले एक और एक्सपीरियंस उन्हें याद आया, जो उन्होंने बताया कि एक बार हम श्री माता जी के लिए लोकल आर्टिस्ट के बनाया हुआ एक गणेश जी का स्टैचू लेके आए थे, और जब हमने उसे श्री माता जी को गिफ्ट दिया तो श्री माता जी ने हमें बताया, श्री गणेश माँ ने कहा कि देखिए श्री गणेश जी के अंदर सब कुछ होता है, सारी सारी शक्तियां हैं, और गणेश जी की कुंडली माँ ने दिखाई, और भैया ने बोला कि जैसी माँ ने हमें ऐसा करके दिखाया, हमारे पूरे रूम में हम सबको वाइब्रेशन फील होने लग गए। तो भैया ने ये बोला लास्ट में कि श्री माता जी चाहे कोई मटेरियलिस्टिक थिंग क्यों ना हो, श्री माता जी की शक्तियों से उसमें वाइब्रेशन फील हो जाते हैं। ये भैया का एक्सपीरियंस था। या ओवर टू यू भैया फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Thanks. Yeah. So daily routine for maintaining vibrations and balance and the attention is first of all, I don't have a rigid fixed schedule, because I find that can become dry or ritualistic after some time. So depending on how I feel and what's working, and what's really getting me to the state of meditation and to feel the vibrations. So I try not to be let's say stuck just with a certain way of doing stuff. But what I do is every morning I wake up, I drink something warm, like some hot water and a lemon, whatever, just to start the day. And then I sit down before Shrimatiji's picture, the candle, and I love to sit on the Mother Earth. So like I'm sitting now on the carpet, and just very simply just try put my attention inside, start getting into thoughtless awareness, and after some time, always start feeling the catches, whatever's catching, whatever the imbalances are, and I'll work on myself. So work on the various chakras, say the mantras if necessary, or let's say it's just a process of trying to empty myself from all the stuff which is in my attention, which is normal. Every day the attention goes out, gets involved with all sorts of things. So just some time to sit and let go of everything, relax, just let everything settle down, clear out as whatever catches I'm feeling. Pray to Shrimati to awaken the qualities of the chakra, say the mantra to the divinity in the chakra, and sometimes, depending on how much time and what the situation is, maybe listen to an extract of a talk of Shrimati. There's a YouTube channel which is excerpts of Shrimatiji's talks, which I really love a lot. Gets inspiration from that, and then I always spend a few minutes just as I'm clearing out, and the tension becomes purer and more in the present. Attention naturally goes onto Sahasrara. I feel Sahasrara relaxing and opening, and naturally the attention goes on the spirit. And I start saying, "I'm the spirit. I'm the spirit." It becomes a natural. My attention gets drawn to the spirit. So then that's the way I feel. Actually, that gives me also another memory with Shrimati. Once I came for a puja in Delhi. It was
first Shivaratri puja and then birthday puja. And I brought some stuff from Italy to take to Shrimataji. So after the Shivaratri puja, I went to Shrimataji's house in Delhi and gave her what I brought. And she said, so, how was the talk? Yeah. So of course, what to say? I said, Mother, beautiful talk, amazing. And she said, yes, okay, but the key point is not to worry about it. Just put your attention on the spirit and don't worry about anything. So this mantra which Srimataji gave me in that moment has always been with me. Just put your attention on the spirit and don't worry about anything. So that's also when I meditate. It's just okay. Just put my attention on the spirit and don't worry about anything. Just let it all go. No problems. Then everything works out. So that's the morning. That's what I do in the morning. Sometimes I have 5 minutes. Sometimes I have more time. But what I generally do as an attitude is not to say, now I'm going to sit and do meditation, get into thought. I just say, I'm going to sit for a few minutes, just for a few minutes, because sometimes you don't feel like it. Sometimes you're in a rush. So what I find is, okay, just sit for a few minutes. And almost always it ends up being 20 minutes, half an hour, maybe even longer, because I just get into the meditation. But without that forcing, when I've tried to force it, it doesn't work. And the same in the evening. Not always. Sometimes maybe I'll fall asleep in front of the television or whatever. But generally, I try to not go to bed too late, so I'm still awake. And then I also say, okay, just a few minutes. I'll sit in front of Srimataji's photograph. Just relax, clear out a little. Get the attention back, clear out. And same thing happens. I feel as soon as I sit in front of Srimataji's photograph, something starts happening. And the attention starts getting drawn in, the system starts being balanced and activated. And what I find when I do meditate in the evening before going to bed, my energy state, my vibrations are much better. I meditate nicely in the morning. So yeah, this is basically what I do every day. Thanks for answering and also sharing that miraculous experience that you shared. I will keep this in mind. So yeah, भैया भैया ने बताया हमें कि सबसे पहली चीज जो डिसिप्लिन के लिए उन्होंने बोला कि उनका कोई ऐसा फिक्सचर नहीं है कि यार अगर ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है। वो कह रहे हैं ऐसे अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाए, ये थोड़ा कर्म कांड टाइप का हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कोई मेरा एक फिक्सचर नहीं है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ। मेरा जैसा जितना मेरे पास टाइम होता है, जितनी मेरे पास जैसी मेरी सिचुएशन होती है उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो उन्होंने बोला सुबह में जब भी उठता हूँ मैं थोड़ा गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ। और सबसे पहले वो कह रहे हैं कि मैं ज्यादातर टाइम मैं कोशिश करता हूँ मैं धरती माँ पर ही बैठूं। और सबसे पहली चीज जो वो करते हैं वो अपनी अटेंशन को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ये वही चीज है, मतलब आत्मनिरीक्षण करना, अपने आप को अपने अंदर अपनी चित्त को लाते हैं, अटेंशन को लाते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने बोला कि फिर वो निर्विचारिता की स्थिति में आने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे निर्विचारिता होती है तो उन्होंने बोला कि उन्हें अपने चक्र फील होने लग जाते हैं, अपनी उंगलियों पर, हथेलियों पर कोई अगर चक्र पकड़ रहा है उन्हें पता चल जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि उस चक्र की सफाई फिर मैं कर लेता हूँ, वहां पे हाथ रख लेता हूँ, मंत्र ले लेता हूँ। और धीरे धीरे करके मैं अपने आप को खाली करता चला जाता हूँ, जो भी चीज मेरे दिमाग में भरी रहती है वो धीरे धीरे करके खाली हो जाती है। मैं और ज्यादा निर्विचारिता में चले जाता हूँ। और फिर उसके बाद जो जैसा ही मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं श्री माता जी की फिर अमृतवाणी भी सुनता हूँ। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड किया है जो वो देख खुद जिससे श्री माता जी की टॉक सुनते हैं, वो एक चैनल है एक्सर्प्ट और श्री माता जी Excerpts. एक्सर्प्ट। तो इट्स बेसिकली वहाँ पे छोटे छोटे श्री माता जी के आपको टॉक्स के मिल जाएंगे आपको, जिसमें श्री माता जी ने एक टॉपिक पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉक्स बोली हैं, तो उसमें आपको छोटे छोटे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो वो चैनल भैया फॉलो करते हैं। उसके अलावा जैसे ही सहस्त्र पे जाते हैं फिर उनकी सफाई होने लग जाती है। इस पूरे आंसर के दौरान भैया ने एक और उन्हें एक्सपीरियंस याद आया। उन्होंने बताया कि जब
जब वो इंडिया आए थे, जब शिवरात्रि, पहली शिवरात्रि और बर्थडे पूजा हुई थी, तब उन्होंने श्री माता जी के लिए इटली से कुछ गिफ्ट लेके आए थे। तो बर्थडे पूजा के बाद श्री माता जी, जब वो श्री माता जी से मिले, तो माँ ने सबसे पहली चीज उनसे पूछी कि आज की अमृतवाणी कैसी थी। माँ ने भैया से पूछी, तो भैया ने बोला कि माँ, आप सब कुछ अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो माँ ने बोला कि एक पॉइंट याद रखना कि कहीं भी टेंशन मत लो, कहीं भी चिंता मत करो, और अपनी जो चित्त है, अपनी अटेंशन जो है, उसे अपनी स्पिरिट पर, आत्मा पर रखो, और कोई भी टेंशन मत लो। तो ये मंत्र भैया ने बोला कि ये जब से माँ ने मुझे बताया, तब से ये मंत्र मेरे साथ आज भी, मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ। मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता, और मैं अपनी चित्त को, अपनी अटेंशन को अपनी आत्मा पर, स्पिरिट पर रखता हूँ। तो आई थिंक ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो हमें भी याद रखनी चाहिए। और भैया ने लास्ट में यही बोला कि जब भी मैं शाम को मेडिटेशन करता हूँ, तो शाम को मेडिटेशन करने से ये होता है कि मुझे अच्छी नींद आती है और मेरी एनर्जी के लेवल्स बढ़े रहते हैं। और लास्ट में भैया ने ये बताया कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठो, तो फोर्स मत करो अपने आप को कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे निर्विचारिता की स्थिति चाहिए, मुझे चक्र साफ होनी चाहिए। आप रिलैक्स रहो बिल्कुल, और धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। अपनी लेकिन अटेंशन को, अपने चित्त को आत्मा पर रखो, स्पिरिट पर रखो। सो बहुत ही सुंदर आंसर था। भैया, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली, you had been a Yuva Shakti, like, and what is your biggest lesson you learned as a Yuva Shakti, and what advice would you like to give to Yuva Shakti around the world today who are trying to balance their Yeah. spiritual growth and growth in this highly distracted and overthinking environment? So मेरा क्वेश्चन भैया से बस यही है कि भैया, आप भी पहले युवा शक्ति रहे थे, और अभी आपका क्या मैसेज होगा हम सभी युवा शक्तियों के लिए, जो अभी हम लोग, आप सब जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट अभी कैसा है, बहुत हम डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग वाला एनवायरनमेंट है। तो हम भैया से बेसिकली कुछ एडवाइस, कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हैं। ओवर टू यू भैया। Okay. So yeah, I mean, when I came into Sahaja Yoga, I was young, but there was no such thing as such as Yuva Shakti because it was like a small group. Sahaja Yoga had started in Milan only since a few years. So soon after coming to Sahaj, I mean, it took me some time to establish myself. Those first 9 months, which I described to you, then plus another, say, few months. But then, right from the start, I just started doing programs. I just started. Everybody wasn't like this elders and the young people and this group and that group and who's expert and who's not expert. It was like um, you've got this great gift, you've got this knowledge which nobody else has. It's precious, and you need to share it. So I had this strong feeling right from the beginning. And my basic approach wasn't I need to wait for somebody to give me permission, you and also my basic thought was I might not be so experienced and have deep knowledge, but I know much more than the people out there. So let me share this with people. And I think just through the more you try and share it, the more you try and express yourself, find ways of doing it and giving voice to it, the more you grow. The more your vibrations get strong, the more you know yourself. Because if you have to explain it to somebody else, you have to first question yourself: what is it about? How can I explain it to somebody else? How can I make it understand? That it's clear for somebody else. And the more you try and make it clear for somebody else, the more it's clear for you. So this is my advice for any Yuva Shakti, is just to take it into your own hands with humility, with respect, with protocol, and express yourself. Try and make it in your own language. Relate to other people, and learn through doing. That's the only way, evolution of experiencing. You get new, let's say, awareness. Based on that, you
have new experiences, and it's continuously evolving. So your new Sahaj experiences become your new conditionings. But what we tend to do is we tend to always continue to redo what we've done before. And even in Sahaj, it can become like a conditioning. So don't become conditioned by what other people are doing and what you've done in the past, and by rigidity and by ritualism, but by experiencing and keeping it continuously alive in your daily life, and finding new ways of growing and experiencing, and picking up, let's say, learning from everybody, not only in Sahaj, but through all your daily experiences. तो भैया भैया ने इस चीज क्वेश्चन का आंसर किया है कि जब वो भैया ने बोला कि जब मैं सहयोग में आया था तब युवा शक्ति जैसा ग्रुप या कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उस समय पे। तो उन्होंने बोला कि बस मेरा तो उस टाइम पे एक ही गोल था कि मैंने सीधा प्रोग्राम करने स्टार्ट कर दिए थे, प्रचार प्रसार के प्रोग्राम करने। उन्होंने बोला कि मैं सबको जाके इस चीज के बारे में बताता था। मेरे मुझे उन्होंने ये भी बोला कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था इतना, मुझे इतने साल सहयोग में नहीं हुए थे, लेकिन मेरा सिंपल सा एक ही मतलब तरीका था कि मैं सबको जाके सहयोग के बारे में बताऊं, सबको जाके सहयोग का ज्ञान दूं, क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो मुझे अभी मिला है और जो दुनिया के लोगों को नहीं पता है। तो मुझे ये बताना है और यही मेरा वो था। और मुझे इस चीज के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे जैसे ये ज्ञान मिला सहयोग का, मैंने लोगों को फैलाना, लोगों तक ये बात पहुंचानी स्टार्ट कर दी थी। और उन्होंने बोला जितना आप ये लोगों को शेयर करोगे उतना आपके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, उतना आपकी क्लियरेंस होगी, उतना आपकी स्थिति अच्छी होगी। और उन्होंने बोला कि इसमें भी एक अच्छी बात ये भी होती है, जब आप किसी चीज, जब आप इस सहयोग के बारे में किसी को एक्सप्लेन करने करते हो तो आपको उससे रिलेट भी करना आना चाहिए कि कैसे करके आप रिलेट करते हो, और आपको उसे सिंपल वे में समझाना भी आना चाहिए। अब एकदम से हम किसी को चक्कर ये सब नहीं बता सकते, हम सिंपल वे में आना चाहिए बताना। और जब भी हम सहयोग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर सहयोग की शेयर कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी बोला है कि नम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ करना है, प्रोटोकॉल के अंदर रह के करना है, और अच्छे से एक्सप्रेस करना है अपने आप को, पूरा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना है। और उन्होंने लास्ट में एक बात बताई कि अगर हम एक ही चीज को, एक ही तरीके को बार बार करते रहेंगे तो सहयोग भी फिर कंडीशनिंग की तरह हो जाएगा। तो हमें हमेशा अपने सीखना है कि हमने पिछली बार कैसे किया था और अब इस बार हम कुछ कैसे क्रिएटिविटी में कर सकते हैं, कैसे अच्छे ढंग से और कर सकते हैं। तो अपने आप को हमें इम्प्रूव भी करते रहना है, ये नहीं कि एक ही तरीके से हम हमेशा करते रहें एक ही चीज को, तो ऐसा भी नहीं करना, हमें न्यू न्यू क्रिएटिव वेज से करना पड़ेगा। और उन्होंने लास्ट में ये बोला कि आपको दूसरों से भी सीखना चाहिए, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ सहयोगी से नहीं, नॉन सहयोगी से भी, जितने भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में उनसे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें सीखते भी रहनी चाहिए। ओके, दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन एंड Sorry, या सो इट्स या can I just say one small thing about this Yuva Shakti? श्योर श्योर। Is I'm 63 now, but I still feel I'm Yuva Shakti. It's it's always new, it's always growing, and I'm always experimenting. And I don't think I've ever done two programs in the same way, of two courses, because every time I'm different and I'm experimenting better ways of doing it. It's a growing. You never end. You never stop learning and growing and becoming more, developing your guru tattva. So you always Yuva Shakti if you think like that, and you always enjoy. That's the main thing. गॉट इट, आई विल जस्ट ट्रांसलेट दिस। सो भैया ने बस यही बोला कि अभी उन्होंने बोला कि मैं 63 63 साल का हो गया हूँ, बट उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि वो युवा शक्ति हैं। हाँ उन्होंने ये बोला कि मैं जरूरी नहीं कि मैं पहले जितना काम कर पाता था इतना मे भी अब शायद मैं उतना ना कर पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा अभी भी मुझे ऐसा लगता है मैं युवा शक्ति हूँ। और मैं हमेशा रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ और एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ सहयोग में। और उन्होंने लास्ट में ये मैसेज भी दिया है कि हमें कहीं भी उस आप लर्निंग स्टॉप नहीं करनी चाहिए, कहीं भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, हमें हर रोज हर समय कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ये भी एक भैया की एडवाइस है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन भैया से यही है। भैया दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सो Thank you. युवा शक्ति often faces peer pressure these days to like to indulge in unhealthy habits, which could be like drinking, partying and distraction. So how did you handle such situation in your professional and personal life while staying true to Sage Yoga?
सो मेरा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भैया से यही है कि युवा शक्ति को सोसाइटी और पीयर प्रेशर की वजह से कई लोग युवा शक्ति से बोलते हैं कि चलो आज पार्टी करते हैं, आज चलो ड्रिंक करते हैं, और इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे करके हैंडल करते थे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, और आप सहयोग से भी जुड़े रहते थे? ये मेरा क्वेश्चन है। ओवर टू यू। Yeah. Yeah. As I said before, when I came to Sahaj, I was already 26 and started. Um, I was already like settling down in my adult life, you can say. So that peer pressure of being like adolescent or early 20s, I didn't have to go through in Sahaj. So I did all the wrong things you can imagine. Okay. Wrong. I was experiencing and looking for my way in life. But I have 3 children. They're all grown up now. And what I've experienced is that it's not easy to grow up in Sahaj in an Adamic society in which there's all sorts of distractions and pressures and so on. Basically, I think the important thing is that we need to respect that each of us needs to find his own way of his own place in life. Okay, there's no fixed rule of how we must be. Yeah? And we have to know why we doing Sahaja Yoga, what it is, and it's because of our desire, pure desire, not because it's what's being told to us or because that's what's a conditioning. So it's not easy to you have to know, you have to make a choice basically, and you experience, and if you basically know that that's what you want and that's your path, then stick by it. You must be true to that. But it's a choice. It's not something you do because you have to. That's one thing. And the other thing is that when I came into Sahaj, when I started meditating, I was drinking. I had like every day, maybe I'd have a beer or something like that because that was normal. I used to smoke. But what happened is when I started clearing out, really, when I started meditating and this whole process happened, I wasn't going to the center, so I didn't have anybody telling me what to do. But automatically, I stopped. When I would drink, I would feel bad. I felt this. I was sensitive to the alcohol, to the smoking. So I just stopped. Basically, I just stopped. Because the inner Dharma or your inner state of vibrations will basically, you'll know what you want to do and what you don't want to do, and you automatically leave whatever's against your well-being. Okay, and I think that's the basic wisdom that you develop, is that you listen to yourself, do what's good for you, what makes you feel good, and if other people don't like it, don't worry. You can be friends with anybody. You don't have to. We don't have to look for recognition in other people. We don't need to have confirmation by other people. But if you respect them and you respect yourself, then they'll respect you as well. So just be yourself, basically, and meditate. गॉट इट। सो भैया ने काफी इंटरेस्टिंग आंसर दिया इस चीज का। भैया ने बोला कि जब मैं 26 साल का था, जब मैं सहयोग में आया, तो जो युवा शक्ति, जो इनिशियल फेज का जो पीयर प्रेशर था, उससे तो वो बच गए थे, भैया ने ऐसे बोला। बट मैंने सहयोग में आने से पहले सारे गलत काम करे हैं, भैया ने ये बोला। उसके अलावा उन्होंने बोला आज मेरे 3 बच्चे हैं, और आज के जब मैं टाइम देखता हूँ तो आज का सोसाइटी के हिसाब से बड़ा मतलब ग्रो कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट ही है। हमारी सोसाइटी ऐसी है आज की डेट में कि ये पार्टीज और इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भैया ने बताई वो ये है कि आप, अगर आप सहयोग करते हो, आप सहयोगी हो और आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको अपने उस पे धर्म पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर ये गलत है, आपको लगता है गलत है, और आपको लगता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, तो आपको देयर इज नो इफ एंड बट। आपको ऐसे नहीं कि
मैं चलो आज ये भी कर लेता हूँ, कल ध्यान कर लूंगा, ऐसा नहीं। हम सबको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर हमें हमें सहयोग मिला है, हमें सहयोग में ध्यान करना है, तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। और आपको ये भी भैया ने ये बोला कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो सहयोग। आपकी शुद्ध इच्छा है तभी आप सहयोग कर रहे हो, तो आपको एक फिक्स चॉइस करनी पड़ेगी और आपको उससे उस चीज पे खड़ा रहना पड़ेगा। भैया ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि जब स्टार्टिंग में वो सहयोग में आए थे तो वो थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करते थे, वो तब सेंटर नहीं जाते थे इतना, और कहते थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग भी करता था, स्मोकिंग भी करता था, पार्टी भी करता था, सब कुछ करता था। तो कह रहे जैसे जैसे मैं ध्यान करता चला गया तो एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा बिल्कुल भी अंदर से इन सब पार्टी करने का मन बिल्कुल खत्म हो गया। तो कह रहे उन्होंने भैया ने बताया कि आई थिंक ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जब हमारे अंदर जब वाइब्रेशन आने लग जाते हैं तो हमारा जो अंदर का जो धर्म है हमारा, वो हमारा खुद ही हमारा मन भर जाता है कि नहीं ये सब चीजें नहीं करनी, ये सब चीजें गलत हैं। सो बेसिकली भैया ने यही बोला कि आपको जो आपको अच्छा लगता है आप उस चीज पे स्टैंड बाय रहिए। सोसाइटी को अच्छा लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस चीज पे खड़े रहिए, अमल कीजिए। और लास्ट में मैंने बोला कि और ऑफ कोर्स सब इन सब के अलावा आप ध्यान जरूर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान बताइए भैया ने। तो ठीक है भैया, जय श्री माता दी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लाइक thank you so much for giving us that much insights. Like it's really, really helpful for all of us. And I will now open like if anyone want to ask any question, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज आप चैट में पूछ सकते हैं, आप माइक ओपन Yeah. करके पूछ सकते हैं। There was a और question before about, sorry, there was a या question before about if you have your attention is overloaded and th- somebody asked before, I think, if you have too many thoughts in your head, or am I mistaken? I thought you'd asked a question before which I hadn't answered, but perhaps I'm mistaken. actually you have answered everything from my side, like Okay, that's yeah. fine then. Yeah. या Okay. एंड इफ देयर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो प्लीज आप माइक खोल के आप हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक क्रिश पूछना चाहते हैं। क्रिश, क्रिश पूछिए क्वेश्चन। Jeshwati, I want to ask that you are talking about the Sahjogis for the new Sahjogis, na? So what you talk about Sahjoga, that you directly talk about the Srimataji, or you are talking about the chakras and different thing in our body. So I want to just जैसे हिंदी में भी एक बार ट्रांसलेट कर दो यार। yeah. जैसे मतलब होता है ना कि हम से किसी नॉन सहयोगी से बात करते हैं तो उनको हम डायरेक्ट श्री माता जी के बारे में बताएंगे या फिर कि चक्र के बारे में बताएंगे, क्योंकि श्री माता जी तो नॉन सहयोगी के लिए तो एक मतलब वो तो जानते नहीं श्री माता जी क्या है। हम लोग जानते हैं ना कि सहयोगी जानते हैं कि श्री माता जी क्या है, तो हम वही मतलब पूछना चाहते हैं। Yeah, so just to clarify, Bhaiya, he's asking about like when we are talking to a non-Sahaj yogi, right, for the very first time Yeah. about Sahaj Yoga. So should we start just by talking about Sri Mataji, or should we start by describing about the chakras and nadis in our body first? Because for a non-Sahaji, talking about Sri Mataji is just like a normal human being to that person. Like it was for me Of and for course. all of Yeah. us when we Of were. course. Yeah. So yeah, that's his question basically. Yeah. Okay. Very nice question. Thank you. Yeah, I think there's no hard and fast rule about how to approach people and how to talk about Sahaja Yoga to people. It depends very much on how you feel and what you want to relate. But my experience is that it's best first to talk about the experience, about the mechanism, like Shimataji does in her public programs. She'll talk about the Kundalini, the feminine power within us, which we have, which is awakened, and we get the experience. And I always because that was the way I came in. For me, that was my experience. So for me, it was first discovering the Kundalini, discovering the spirituality within me, the divinity, and getting the transformation. So I like to leave people very free to discover as they go ahead, and as
as they get the experience and the questions arise, then they they can work it out for themselves. Many times Hello. Shrimati just says you have to work it Mic out for on yourself. okay? But at the same time, in any program, we will always have Shrimatiji's photograph. We'll say this was started by Shrimatiji. She's the founder. Thanks to Shrimatiji that we can have this awakening. She's the principle is one candle, which enlightens another candle. And Shrimatiji, being in that state of awareness and complete yoga and one with the divine, allows us to get the experience of Kundalini awakening. So, yeah, it's always very delicate. You have to approach it in a delicate way. But I think the first and most important thing is that people can experience it themselves. And once they start getting some confidence and they understand that there's reality, there's truth in what you're saying, that you have credibility, then you can, whatever you say, you don't have to convince anybody, but you can say what's what. Okay. That's my experience, especially nowadays. I'm much less into teaching Sahaja Yoga, but more into just saying, hey, let's do it together. Okay, so we'll meditate together, we'll clear out together, do all the techniques together. And then maybe 5 minutes, and we'll say, I'll talk about the deities, the mantras, about Shrimataji, on a gradual level, but without explaining and trying to get people to understand. It's more like, okay, if you say the mantra to Sri Ganesha in Muladhara Chakra, then that's what works. And then we do it. I don't say who Sri Ganesha is and the story and what it means. And I'll just say, okay, the power of innocence is in us in the first chakra. To awaken this power, we take the mantra of Sri Ganesha. Okay, finished. No, not too much explanation. And then later on, you can have time where people can learn and get all the information. So it's more about just getting the experience. Sorry if the answers are a bit long. नो वरीज, आई होप क्रिश आंसर मिल गया हो. मैं बस एक ट्रांसलेट कर देता हूँ. भैया ने बताया कि भैया ने बोला कि जिस टाइम से जब मैं सहयोग में आया था उस टाइम पे काफी थोड़ी डिफरेंट थी चीजें, बट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से 2 बातें बताई. पहली बात यह है कि जब आप किसी को बता रहे होते हो तो श्री माता जी जो पब्लिक प्रोग्राम में जैसे बताती हैं कि पूरा अपने को जो वो चार्ट दिखाती हैं श्री माता जी, उसमें एक चक्र के बारे में बताती हैं, आप वैसे बता सकते हो, कुंडलनी के बारे में बता सकते हो, और कुंडलनी की शक्तियों के बारे में बता सकते हो, और फिर आत्म साक्षात्कार के बारे में बता सकते हो. बट उन्होंने, भैया ने एक बात इंपॉर्टेंट बताई जो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से मिली है कि पहले लोगों को इस चीज की खोज करने दो. पहले आप जैसे उन्हें, लेट से आपने आत्म साक्षात्कार दे दिया, उसके बाद लोगों को खुद ही एक्सपीरियंस करने दो इसका, और जब वो एक्सपीरियंस खुद करेंगे उसके बाद उनके मन में क्वेश्चन आएंगे, फिर जब वो क्वेश्चन आएंगे फिर आप उनकी हेल्प करो. तो उन्हें फोटोग्राफ दिखाओ, उन्हें कैंडल की मदद से ट्रीटमेंट करना सिखाओ, और भी ये सब चीजें दिखाओ. तो सबसे पहली चीज भैया ने बोली कि लोगों को एक्सपीरियंस करवाओ इस चीज का. उसके बाद आपको समझाने की जरूरत नहीं कि भाई सहयोग ही करो, सहयोग करने से इतने फायदे हैं. अगर आपने पहले एक्सपीरियंस करवा लिया उसके बाद लोगों को खुद ही पता चल जाएगा. और उन्होंने बोला कि पहले मैं जब स्टार्टिंग के सहयोग में था उस समय पे मैं सहयोग की टीचिंग, मतलब सहयोग का ज्ञान के बारे में ज्यादा करता था. अब मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, उन सबके साथ कलेक्टिव मेडिटेशन करवाता हूँ. कलेक्टिव में हम ध्यान करते हैं, कलेक्टिव फुट सोक करते हैं, कलेक्टिव सहयोग की क्रिया करते हैं, जिससे उन्हें एक्सपीरियंस हो जाए. अब उन्होंने एग्जांपल लिया कि अब मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि मूलाधार चक्र पे श्री गणेश हैं, श्री गणेश जी की क्वालिटीज बताता हूँ, ऐसा नहीं. अब मैं बताता हूँ कि आप मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी का मंत्र लोगे तो आपके अंदर इनोसेंट जागृत हो जाएगा, इनोसेंट की क्वालिटी आ जाएगी, अबोरिता आ जाएगी. तो जब मंत्र लेने के बाद जब उन्हें एक्सपीरियंस होता है फिर वो उनके मन में क्वेश्चन आते हैं, तो फिर मैं अलग से डिस्कस कर लेता हूँ. तो भैया ने ओवरऑल जो इस चीज का पूरा एक शॉर्ट वर्ड आंसर यही बोला है कि लोगों को एक्सपीरियंस करने दो, उसके बाद आपको खुद ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही आपके पास क्वेश्चन लेके आएंगे, बस उन्हें फर्स्ट एक्सपीरियंस कराना है. थैंक्स अ लॉट क्रिस, इतने सुंदर क्वेश्चन पूछने के. थैंक्स अ लॉट भैया. इफ देयर इज एनीथिंग, किसी को क्वेश्चन पूछना हो जी, गौतम Can I अंकल.
Yeah, sure. Can I just add to this is that when I want to talk about Shri Mataji, explain that she's Adi Shakti, because in the West it's very much more difficult than in India, I think, because it's much easier to talk about divinity and Adi Shakti in India, but here it's much more difficult. But when it gets to the point where I feel people are ready, then I say that the feminine energy, the divine feminine energy, which we've discovered, which we've experienced as the Kundalini, has taken, when it's manifests in the creation, it assumes different forms and creates different divinities, which are in the chakras, but it also takes human form in various stages of human evolution to sustain human evolution. And this divine feminine energy in the current times has taken the form of Shri Mataji. She has come in the form of Shri Mataji. So that's the way I try to introduce the fact that Shri Mataji is incarnation of the divine feminine power of is the Adi Shakti. But after a few weeks, let's say maybe after a month or 2 months, I'll say this. You will start describing the methods of meditation, or like? Sorry? You are saying after 1 or 2 months, what? Sorry, could you repeat that? Like, I'll tell this to people that are coming to the program after 1 or 2 months of their starting Sattva Yoga. Okay. So sooner or later, we have to say. I mean, it's not like you leave it for that they have to work it out by themselves. At a certain point, after having introduced the fact that in the chakras, even after the second or third time, I say this feminine energy manifests in different forms in the chakras. These are the deities. You just say the mantra without explaining too much. So they're used to the idea of different manifestations of the divine energy, of the primordial power. And after, let's say, a certain time, I will say that Shri Mataji is the manifestation of the feminine energy in these times. ओके गॉट, थैंक्स. सो जस्ट मैं इसे भी ट्रांसलेट कर देता हूँ. भैया ने बस एक बात और बताई कि जो इंडिया में आप आदिशक्ति या परमात्मा की ये बात करते हो तो फिर भी इजी है एज कम्पेयर टू जब आप विदेशों में करते हो, क्योंकि वहां पे लोगों को समझ भी नहीं आता है. तो उन्होंने बोला कि मैं पहले स्टार्टिंग में ये भी बताता हूँ कि लोगों की कुंडलिनी शक्ति क्या है, कुंडलिनी शक्ति से क्या क्या होता है, सब बताता हूँ. फिर धीरे धीरे करके मैं फिर उन्हें समझाता हूँ कि श्री माता जी ही की वो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, जिससे उन्हें और ज्यादा रियलाइजेशन बढ़े, उन्हें एक्सपीरियंस और ज्यादा मिले. तो ये भैया लेकिन बताया उन्होंने कि मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ, एकदम तुरंत ही एकदम से सब कुछ नहीं बताया था. जैसे जैसे उन्हीं कुंडलिनी के बारे में मैं उन्हें नॉलेज देता हूँ नए लोगों को, उसके बाद मैं फिर श्री माता जी के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ. उन्होंने बोला टिपिकली 1 महीने के अंदर अंदर फिर मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं बताता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक गौतम अंकल कुछ पूछना चाह रहे थे. गौतम, जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. भैया बहुत अच्छा लगा जो हमारी ये युवा शक्ति की बैठक होती है, इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. जितने भी हमारे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं उनसे एक चीज पूछना चाह रहा था. अभी इस बीच में काफी सेमिनार्स में जाने का मौका मिला श्री माता जी की कृपा से. तो जितनी मैंने देखा कि अधिकतर नारी शक्ति हमारे सहयोग में बहुत ज्यादा है, लेकिन अधिकतर उनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि उनके घर से जो है सपोर्ट नहीं है, या उनके जो हस्बैंड हैं वो ड्रिंक करते हैं. तो हम किस हिसाब से उनसे बात करें कि वो प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाए, यही मैं पूछना चाह रहा था. जय श्री माता, ये मेरा प्रश्न है. Okay, thank you, Uncle, पूछने के लिए. So the question is basically about so Gautam Uncle is saying that he has attended a lot of seminars and he has seen there is a lot of Nari Shakti in Sahaj Yoga, right? So he is saying, but Nari Shakti typically faces a lot of problems, like they are not getting permission from their household to do Sahaj Yoga meditation. Some of their husbands drinks a lot. So it's kind of like very difficult for them to meditate. And how can we talk to them about this? How can we improve this situation for the Nari Shakti of Sahaj Yoga? Yeah, good question. It's very difficult for some people because they're not supported by their families, and they find difficult situations in their household or in their relationships.
Once again, I think there's no hard and fast rule, but I know many Saja yogis in Italy, maybe their husbands don't do Saja yoga, or their wives, or their parents, and so on. Yeah, they basically, try and keep the balance between the two. Okay, so I think one can be a Saja yogi 100% in your attention and in your behavior and in your doing. At the same time, you can be a wife or a husband or a parent, and do both of these roles. Shrimataji, in some occasions, have said, well, she's done Sahaja Yoga 100%, but at the same time, her family wasn't doing Sahaja Yoga. So I think if you have that loving capacity, and basically people feel loved by you, and you manage to keep your balance and not be brought down by the people that you're surrounded with, then eventually people will support you and they will allow you to do what you need to do. Sometimes it can be very, very difficult. It depends on how bad the person is, if they're actually obstructing you. Okay. In my specific case, my parents were against me doing Sahaja Yoga, and they tried to stop me from doing Sahaja Yoga. Or more than stop me, they were it was like an attachment and a possessiveness to say, if you do that, we're going to lose you. So trying to emotional blackmail to keep me where I was. And Shrimataji got to hear about this. It's a long story, which maybe another time I can tell you. But she basically said, "What? Your parents aren't happy that you're doing Sahaja Yoga, that you become a dharmic person, that you're happy, and that you're spiritual, on a spiritual path." So, well, she basically obliged me to make myself respected. She said, no, you have to take a stance. You have to say, no, I'm a Sahaja Yogi. This is what I do. And so that created a lot of difficulty for some time in this relationship, especially with my mother. But at the end, after about 1 year, my mother was saying, well, she realized that I wasn't available for the relationship on those terms. So about after 1 year, the relationship became very much more healthy. She started respecting that I was doing Sahaja Yoga. We had a very normal relationship in which we respected each other in whatever we're doing. But I had to be very clear about my position in Sahaja Yoga. This is for me the most important thing. Okay. But at the same time, it's difficult to say. Every case is different. So I don't want to say you must go against people who are stopping you, or you must or you must be loving and kind, and through love they will understand. So personal experience is that the problem was me, because it was a left Vishuddhi problem. I was feeling I have to be a good son, and I have to, through love and patience, then they will understand. But it wasn't the case. Sometimes you have to say, no, this is what it is. And you're doing it's going to be of help for you, because you get rid of this left Vishuddhi, where you have to behave yourself in a certain way. And you're doing a good thing for the other people, because then they stop trying to dominate you. They stop trying to make you
do what they want. So you basically put an end to that negative attention, which is, there's always this game of trying to keep people where you want them. Okay, sorry if took a bit long there. सुंदर आंसर भैया ने किया। भैया ने बताया कि ये जो सिचुएशन है ये सब हर इंसान की अलग अलग होती है, किसी किसी में डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होंगी, किसी किसी में थोड़ी कम होंगी। बट उन्होंने बोला कि इटली में ज्यादातर सहयोगी क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं, मतलब नारी शक्ति के बारे में बोला कि ज्यादातर सहयोगिनी कोशिश करती हैं कि वो बैलेंस करें दोनों का, सहयोग का और उनकी वाली लाइफ का, जिसमें उन्हें जैसे लेट्स से अगर उनके कोई घर वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं तो दोनों लाइफ का बैलेंस करते हैं। अगर आप सहयोग में 100% हो तो आपकी अटेंशन, आपका ध्यान, आपकी हर चीज आप करो, लेकिन जब आप दूसरी वाली अपनी लाइफ में हो तो आप उस वाली लाइफ के हिसाब से बिहेव करो। उन्होंने सबसे प्राइम, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया उसमें श्रीमाता जी का दिया कि श्रीमाता जी ने पूरा सहयोग में अपनी 100% दिया, लेकिन उनकी फैमिली एट द सेम टाइम सहयोग में नहीं भी थी, तो माँ ने दोनों का बैलेंस किया। इसका बहुत सुंदर भैया ने एग्जाम्पल दिया। और आप, उन्होंने बोला कि आप स्ट्रांग भी रहो, अगर आपको लोग नीचे गिराना चाह रहे हैं आप नीचे भी मत गिरो, आप संतुलन में रहो, आप सीखते रहो। और उन्होंने एट द सेम टाइम यही बोला कि ये कहना आसान है, कभी कभी सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती है। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि जब मैं सहयोग में आया था तो मेरे घर वाले मुझे सहयोग नहीं करने देना चाहते थे, वो थोड़े पॉजेसिव थे, मतलब वो, उन्हें अटैचमेंट सा था कि बेटा अगर तुम सहयोग करोगे, तुम इतनी दूर दूर पूजा में चले आ रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो हम तुम्हें खो देंगे, तुम हमारे बेटे हो। तो उन्होंने जब ये उन्होंने बताया कि श्रीमाता जी को ये बात पता चली, श्रीमाता जी ने मुझसे, भैया से बोला कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें एक धार्मिक, एक संत इंसान बनते हुए देख नहीं सकते, इतना तुम्हें इतना अच्छा इंसान बन गए, तुम्हें उनसे वो देखा नहीं जा रहा। तो श्रीमाता जी ने बोला कि तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, तुम्हें मना करना ही पड़ेगा। तो माँ ने उनसे बोला कि तुम्हें नहीं बोलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि जब माँ ने मुझे ऐसा बताया कि तुम्हें सहयोग पे खड़े ही रहना है, तुम्हें ना बोलना है उनसे, तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी रही उनकी मम्मी के साथ, पापा के साथ इतना नहीं था, मम्मी के साथ बहुत डिफिकल्टी रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच थी भैया से। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी रिलेशनशिप मम्मी के साथ उनकी काफी सही सुधर गई, मतलब नॉर्मल हो गई। उनकी मम्मी का जो अटैचमेंट था वो एक दो साल में कम हो गया। और उन्होंने बोलता है कि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा लेफ्ट विशुद्धि भी पकड़ा जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि हमारे मन में हमेशा गिल्ट रहती है, यार मुझे एक अच्छा सहयोगी बने रहना है, बट मुझे अगर मेरे मम्मी पापा सहयोग में नहीं है तो मुझे अपनी मम्मी पापा की भी बात माननी है। तो और मैं अपनी मम्मी पापा से कुछ अगर ऐसे बोलूंगा तो मुझे गिल्ट सा फील होगा कि यार मैंने अपनी मम्मी पापा को ऐसे बोल दिया। तो आपको अपनी लेफ्ट विशुद्धि भी थोड़ी क्लियर रखनी पड़ेगी इसमें। और आपको, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सहयोगी हैं, आपको पूरा डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी और होंगी, उन्होंने ये बोला कि सबके साथ अलग अलग दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको खड़े रहिए सहयोग में, धीरे धीरे करके चीजें सब अच्छी हो जाएंगी और अपनी लेफ्ट विशुद्धि पे भी थोड़ा क्लियरेंस कर लीजिए। ये भैया का आंसर था। आई होप अंकल आपको आंसर मिल गया होगा। Thank you, Uncle. Question Yeah, was I would like yeah. to add something to this. Yeah, absolutely. After a short time after Shrimati said with my parents, I had to take a distance. My wife was pregnant, and I went to Shrimati, and Shrimati asked who is going to help Christina, my wife, with the pregnancy and with when the baby was born. So I said, well, I don't know, because her parents are not Sahaja Yogis. She said, oh, but they're very good people, very good vibrations. What's the problem? Her mother can help her. So she says she's not like your mother. So then you have to have your discernment. You have to know. It's not a question if you're Sahaja Yoga or not. It's if the people are dharmic, if the vibrations are okay, you can relate, you can have relationship with people who are not Sahaj. But if they're good people, if there's a negativity which is in some way attacking through whoever, then you need to take a position. That's my experience. कि जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो श्रीमाता जी को जब पता चला, श्रीमाता जी ने बोला कि तुम्हारी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं तुम उनसे हेल्प मांग लो। वो तुम्हारी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स की तरह नहीं है, उनके वाइब्रेशन अच्छे हैं,
वो लोग धार्मिक लोग हैं, आप उनसे हेल्प मांगो, वो जरूर आपकी वाइफ की हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के वक्त पे। तो श्री माता जी ने एक बात बताई कि अगर कोई इंसान सहयोग नहीं भी कर रहा है लेकिन उसकी वाइब्रेशन आपको अच्छे फील हो रहे हैं, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप बना सकते हो, आप उनके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है। सो थैंक यू सो मच भैया इसके लिए भी। और किसी और कोई क्वेश्चन? आज का सेशन हमें बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला आज ना, सुंदर। हाँ, I don't have a question, but I just want to thank. I don't know what to say because when we started, the first word which I think Devansh is ready to be a international level translator because no matter how much is the content, how long is the content, he never misses anything and everything comes out loud, crisp and clear to everyone. When he started, he called you uncle, but the power of Sejoga meditation has turned you from uncle to bhaiya. So that is the reverse aging which you have demonstrated here, and everybody. And we are all so excited by your answers. We are honored to have you here. And I am the one who reached out to you through Thank you. Preeti. And this is the Yuvashakti session we have on each Saturday. And because it's a Yuvashakti session and I am no longer a Yuvashakti, that's why we take a back seat and we allow wonderful people like Divyansh and Achal and other people to host the meeting and learn from experienced and dedicated Sahajogis like you. So we are very, very grateful that you accepted our request and you came and you shared your experiences. You relived some of the very personal moments for us. We are really grateful because we learned a lot, especially in the last question. Thank you so much. And Thank we will you. look forward to having you here in the meeting in future also. And definitely we'll need recommendations from you for more sessions, for more from other people who you think are good for this meeting, who will be willing to accept our request and will be able to motivate our Yuva Shakti. We are really grateful for you to have accepted this. Sorry, we do not have a very big number today. Sometime it goes up to 50, but as the time progresses, slowly then people get into household because this is 9:40, 9:50 India time dinner. So mothers would be definitely, their attention is gone towards the kitchen, but they have heard you and we have really loved your answers and your presence. Thank you for sharing your vibrations. Okay, no, thank you very much. It was beautiful to be here and to be able to share this with you. So I'll show you something what we were doing while we were listening to your beautiful answers. Can you see this? Yes, yes. So we are going to do coconut treatment tomorrow, 24 sets, and we were preparing the coconuts so that there are some treatment which we do above the ground, and most of the adharmic people they know what Shrimataji is, who she is, and they tear off the photographs or remove the photograph. But coconut works from under the ground. It clears the complete area. They don't know where it is, and it is really helping us. So tomorrow, with the Yuva Shakti is here, we are going to do 24 sets of coconut so that this area gets cleansed. So that is what we were doing. Vikrant भैया, जी भैया बताइए भैया, ज्यादा आनंद में चले जा रहे हो आजकल, बात नहीं कर रहे आप. नहीं, थैंक यू एंटोनी भैया, थैंक यू फॉर कमिंग. The experience you have shared with us, this is very useful to all our युवा शक्ति. मैं अपने युवा शक्ति भाई बहनों से इतना ही कहना चाहूंगा कि भैया ने एक बात कही थी, आज थोड़ा सा टफ टाइम है युवा शक्ति ग्रोथ के लिए, पर ऐड करूंगा मैं एक चीज कि आज से 25 साल पहले अमर भैया हम लोग आज ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकते थे जैसे आज हो सकते हैं. आज भी हम लोग ऑनलाइन सामूहिक हो बिल्कुल एग्री सकते करता हैं. हूँ. टेक्नोलॉजी, we have to use it. एंटोनी भैया, एक्चुअली before 20 to 25 years we could not be get together like this as today we are talking. You are sitting in the Italy and we are sitting in India and we are Yeah, it's amazing. You know, locations, it's a great opportunity to yes use भैया, technology. different locations from the all over Uttarakhand, and this is blessings from Shri Mataji and message to all Yuva Shakti that you will have lot of opportunity to listen the experience from all the old Sahajogis who work with Shri Mataji. Shri Mataji has given so many opportunity to old Yuva Shaktis. So these all are experience. Thank you, Antony Bhaiya, once again. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji Jai to Shri everyone. Mataji. Over to you, Divyansh.
we can say a formal Last, thank you, and we can thank Mataji. Vikram ला, Bhaiya. हाँ, लास्ट हफ्ते हम लोगों ने एक शुरू किया था कि जब हम छोड़ेंगे तो वी विल हैव ए 1 to 2 minute मेडिटेशन. ओके, तो हम ये अभी हमेशा करेंगे. Beautiful. And we will request Antony Bhaiya only to do this, steer this, guide this 2 minutes last meditation before we log off, so that we start with Shrimataji and we finish with Shrimataji. Okay. Fine. Over to you. Okay, so let's close our eyes, open our hands on our lap, take a few deep breaths to put our attention back inside. Let's bring our attention into Sahasrara Chakra. And let our attention be one with the holy lotus feet of our Divine Mother. Mother, our only desire is to be one with you. Let's get into that state of silence, deep silence, the witness state where we become one in the ocean of divine vibrations. And let's just thank Shri Mataji for having come on this earth, for having given us realization, for allowing us to be her instrument. Jai Shri Mataji. We can Jai raise our Shrimataji. kundalinis. दिवाज मेरे को एडमिन बना देना रिकॉर्डिंग के लिए. एक फोटोशूट ग्रुप वाली सब लोग कैमरा खोल लीजिए बेटे, लास्ट में सी ऑफ वाला.
और कोई? जय श्री माता जी। Nice to see everybody. Yes. जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। Thank you so much, Antony, for joining us today. Okay, thank you, and we'll Insights. see you hopefully another time in this Yeah. meeting. Thanks a Bye-bye. lot. Bye Bye-bye. Jai Shri Mata ji. Mata ji. Bye-bye. जय श्री माता जी। Jai Shri जय Mata श्री ji. माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।